And this is exactly now what we are going to talk about, because at a time when the political commentary over cow urine and Bihar DNA is already raising a lot of stink, the AAP MLA Ranjendra Gautam has now stirred the cauldron once again. Now, while paying tribute to Dr. B.R. Ambedkar on his 67th death anniversary in Sonipat and Haryana yesterday, the former Delhi cabinet mantri ended up making highly offensive comments, objecting to Dalit youth participating in Kavar, seva and also in sanatan shobha yatra. He ended up linking mandirs to rape and murders as well. ये कहना कि वो कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मंदिर क्यों जाते हैं, क्योंकि मंदिर जाने से हत्या होती है और बलात्कार होता है। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपके बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए, जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। Now, if you remember, this is not the first time when Ranjendra Gautam has made such anti-Hindu comments. In October last year, the then AAP Mantri attended a mass convention or conversion event where Hindus were being converted to Buddhism. He was seen leading that pledge never to worship Hindu gods, and he made all kind of names that he gave to the Hindu deities as well, saying that Hinduism is actually harmful to humanity. After the controversy, he resigned as a Mantri but continued to defend his statements. Also, in an interview to an online portal, he claims that Hindus strike fear in the people's heart and create chaos, and that the only way was to stop them and to make them a minority. The BJP has now picked up this issue, as has now referred to all of the statements that have been made out, and has directly questioned the Aam Aadmi Party chief, who himself calls a Hanuman Bhakt, and saying that you are not taking action against a serial Sanatan basher, then how come you are a Hanuman Bhakt yourself? और यही सवाल उठाते हुए अब बीजेपी और उनके अन्य नेता वो भी उठाते हुए अगर नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बताया जा रहा है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपको नमस्कार। हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बाकी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ जाएं। अनुजा कपूर फ्रॉम द बीजेपी इज ऑल्सो विद अस। अनुजा, गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन संजीव जी, मेरा सवाल आपसे पहले यही होगा, सबसे पहले अगर ये जानकर कि आखिरकार हिंदुइज्म, हिंदू धर्म से किस बात का बदला निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? देखिए, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दलित और जितने भी निचले पैदान पे जो पहले से खड़े थे, निश्चित तौर पे उनके साथ भेदभाव और छुआछूत की व्यवस्थाएं रही है और वो अपनाया गया है। एक लंबे वक्त तक हम जानते हैं कि हरिजनों को मंदिर में प्रवेश तक करने की इजाजत नहीं थी। आपसे यदि हम ही पूछ दें कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी मंदिरें हैं जहां दलितों को या हरिजनों को वहां पे पुजारी नियुक्त कर दी गई हो, तो जिस दलित के साथ भेदभाव किया गया हो, जाहिर सी बात है कि यदि दलित अपने उद्गार को व्यक्त कर रहा है तो वो बुरा नहीं है। इसमें इसको पूरे हिंदुत्व के परिप्रेक्ष्य में यदि आप करने के लिए, अनुजा, इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड, संकेत इज आल्सो विद अस। गुड मॉर्निंग संकेत, टू यू एज वेल, to actually put forward your stand. Why are you demeaning the other? Anuja, help us understand. I think the other political parties, spokespersons who are sitting here, they forget that the Dalit which they are talking and the OBCs what they are talking. Ramnath Kovind ji was already, he was a president of India. Adivasi ji, Murmuru ji is already the president of India. What more do they want when we see the Prime Minister of India is OBC? So who's ruling the world? OBC? I think by demeaning the minorities like this, and the Congress people who talk about that the KCR is a Bihari, I don't know who's doing what. I just want to congratulate Congress for bagging BJP's vote in South now. They are working tirelessly and very hard for BJP to take more votes in South. You know how much division, Sanket, that this country needs to see and witness, and after so many years, division between North and South, division between religions, even when it comes to demeaning one another, Sanatan slander, wasn't that enough that Hindus are also now being demeaned? So any person for that matter, whether it's a prime minister or any member of the parliament or any leader for that case, has to be very careful and should not make callous or capricious or negligent statements which would demolish the basic structure of unity and diversity of the country.
There are instances where several leaders from several parties, including the BJP, have made the statements which is of divisive in nature, including the Prime Minister, Honorable Prime Minister. Kapde se pehchano. What does it mean? He's a Prime Minister of the country, and entire world is watching. So like that, I'm not saying who is saying what, but any statement from any corner which divides the unity and integrity of the country is dangerous to the democracy. And I'm not just blaming the Congress or the BJP or any other party for that matter, in entirety. But especially those holding the position like a Prime Minister, which is being watched by the entire world, he must be more and more careful. And especially the Prime Minister of this country. So you're saying that with the position lies the responsibility and power. लेकिन संजीव जी, अगर हम बात करें राजेंद्र पाल गौतम को, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था जब अपने मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था पिछले उनके बयानों के तहत। अब फिर जाकर अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आखिरकार क्या जवाब देगी आम आदमी पार्टी और उनके चीफ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये बात करना इतना बुरा हो गया? देश के प्रधानमंत्री खुद के जाति के बारे में बताने में वो गुरेज नहीं करते हैं। अभी हमारी बहन यहाँ बैठ करके देश के राष्ट्रपति के बारे में बता रही हैं और तमाम उन बड़े संवैधानिक जगहों पे जो लोग बैठे हैं उनके जाति को बताने का प्रयास कर रही है। आखिर इसकी नौबत आई क्यों? जाहिर सी बात है कि देश में निचले पैदान पे जो दलित हैं आज भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं है, उनके साथ भेदभाव है। ये बात बताने के लिए कि ये बराबरी हो गई, जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है ये बात करने में। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आज भी समाज का वो वर्ग जो हाशिए पे है उसके साथ भेदभाव हुआ है। हाँ, धीरे धीरे वो मजबूत होना शुरू हो गया, उसने अपने बातें करनी शुरू कर दी और उसको बुरा किया है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और इसे हिंदू ये और समय की कमी है संजीव जी, समय की कमी है। अनुजा से मुझे लास्ट कमेंट लेना है जी। और ये हिंदू विरोधी नहीं है। तो अब मंदिर में जाएंगे, बलात्कार होगा और मर्डर होगा, कत्ल होगा, ये हिंदू विरोधी नहीं है तो आखिरकार क्या है? अनुजा, this is where the low politics which you have seen below the belt, what Congress and the other ecosystem are trying to portray is because they are Chunvi Hindus and they come only when they have to come up in elections. Modi ji has worked tirelessly for the OBCs, for the minorities, and they've showed it on the ground in the schemes, in their policies, and that is why we have backed. I think what you meant to say was call out as far as the opposition parties are concerned, Chunavi Hindus only at the time when the elections are near. Thanking all our guests for joining us here on the Morning News. Thank you very much for your insights.